Study about the pyruvate to acetyl-CoA pathway from the chapter of Metabolism of Carbohydrates. This pyruvate to acetyl-CoA pathway is the pathway that links the glycolysis to the Krebs cycle. This is an intermediate pathway between the glycolysis and Krebs cycle. From the one molecule of glucose, when it enters into the glycolysis, by the series of reactions, it is broken down into pyruvic acid, and then pyruvic acid, through a special transport mechanism, is carried inside the mitochondria, and here the Krebs cycle proceeds. So this pyruvate to acetyl-CoA is an intermediate part, is a linker that links the glycolysis to the Krebs cycle. This pyruvate to acetyl-CoA pathway takes place inside the mitochondria. In this reaction, in this pathway, pyruvate, a 3-carbon molecule, this carboxyl group is removed in the form of carbon dioxide. इसमें pyruvate जो है इसका carboxyl group, pyruvate is a 3-carbon molecule, इसका carboxyl group जो है वो remove किया जाता है in the form of carbon dioxide, and then pyruvate is converted into the acetyl-CoA, which is 2-carbon molecule. And in this reaction, this 2-carbon is attached with the coenzyme A. Coenzyme A की attachment होती है, and then it becomes acetyl-CoA. This acetyl moiety together with the CoA, it becomes the acetyl-CoA. And in this reaction, there is the production of the NADH. NAD is reduced into the NADH, and this carboxyl group from the pyruvate is removed in the form of carbon dioxide. The overall reaction is from the metabolism of carbohydrates, that carbohydrates goes through a series of reactions. At the end, it gives the pyruvate. Then from the pyruvate, it is converted into the acetyl-CoA with the help of the enzyme Pyruvate Dehydrogenase complex. So this Pyruvate Dehydrogenase complex, it converts the pyruvate into the acetyl-CoA, and then acetyl-CoA, it enters into the Krebs cycle. This intermediate reaction, this intermediate pathway that links the glycolysis to the Krebs cycle takes place with the help of the enzyme Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme, जो pyruvate को convert करता है acetyl-CoA में 3-carbon molecule, जिसमें से carboxyl group को remove करते हैं in the form of carbon dioxide, and it becomes the 2-carbon molecule acetyl together with the coenzyme A. It becomes the acetyl-CoA, and as a result in this, the oxidation takes place. The NAD is converted into the NADH, and in this case, in this oxidation process, NAD is reduced into the NADH. This reaction is catalyzed by the most complex enzyme, Pyruvate Dehydrogenase complex. Pyruvate Dehydrogenase complex, it is present inside the mitochondria. Mitochondria में present होता है, most specifically जो mitochondrial inner membrane है, ठीक है? It is present, this Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme is present inside the inner mitochondrial membrane. As the mitochondria consists of the outer membrane, inner membrane, and then inside there is the matrix. And the matrix Krebs cycle takes place, and in the cytoplasm glycolysis takes place. Glycolysis का जो end product होता है वो होता है pyruvate, ठीक है? Then pyruvate, there are special transport, there are special carrier, there are special transport mechanisms through which pyruvate will be transported inside the matrix, where the Krebs cycle will take place. So before Krebs cycle, pyruvate has to be transported inside the mitochondrial membrane, and then it will be converted into the acetyl-CoA with the help of this enzyme, Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme, and then acetyl-CoA will enter into the Krebs cycle. So this Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme, इसके 3 parts होते हैं. This pyruvate, this is a complex enzyme. It's a combination of many coenzymes and vitamins. So this Pyruvate Dehydrogenase complex, इसके 3 parts होते हैं. आसानी से इसको समझने के लिए इसको कहा है E1, E2 and E3. These 3 main parts of the Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme. So these E1, E2 and E3 have specific names. E1 of this pyruvate, this is the structure of the Pyruvate Dehydrogenase complex enzyme. E1 is known as Pyruvate Dehydrogenase. That, as the name indicates, there will be the dehydrogenation reactions. Basically, in this step, the decarboxylation takes place. जो आपको बताया कि carboxyl group जो है वो remove हो जाता है in the form of carbon dioxide. आपके पास E1 में होता है. That's the pyruvate dehydrogenase.
The E2 is known as dihydrolipoyl transacetylase. It means that there will be the transfer of the acetyl group, as the name indicates. And the third is dihydrolipoyl dehydrogenase. ठीक है, जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के या आपके पास जो है वो डिहाइड्रोजनेशन के रिएक्शन जो है इसमें होंगे. तो dihydrolipoyl means that it will contain the lipoic acid. So this pyruvate dehydrogenase complex enzyme, it consists of three parts: E1, E2, and E3. E1 is known as pyruvate dehydrogenase, E2 is known as dihydrolipoyl transacetylase, and the E3 is known as dihydrolipoyl dehydrogenase. अभी जो हर एक पार्ट है इसमें आपके पास इसके जो है फर्दर इसमें इसके सब पार्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? This pyruvate dehydrogenase complex enzyme, it consists of 5 coenzymes. ठीक है, इसके 5 cofactors होते हैं, 5 coenzymes होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? That's the thymine pyrophosphate, lipomide, flavin adenine dinucleotide, coenzyme A, and nicotinamide adenine dinucleotide. ये 5 coenzymes होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट होते हैं इस pyruvate dehydrogenase complex enzyme के. But these जो 3 पार्ट हैं इसके अलग अलग जो है coenzymes होते हैं, cofactors होते हैं. The E1 pyruvate dehydrogenase, it contains the thymine pyrophosphate. इसका जो मेन पार्ट, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, जो इसके फंक्शंस परफॉर्म करता है, that is through the thymine pyrophosphate. The second E2 pyruvate transacetylase, उसके जो cofactors हैं वो है coenzyme A and lipoic acid, right? And the E3 pyruvate dehydrogenase, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है flavin adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide. So this E1, E2 and E3, E1, E2 and E3 इसके further factors होते हैं, ठीक है, इसके further co-factors होते हैं, coenzymes होते हैं. So this enzyme basically consists of 3 enzymes, ठीक है, 3 enzymes होते हैं. फिर उन 3 enzymes के जो है main co-factors होते हैं, coenzymes होते हैं. E1 contains the thymine pyrophosphate, E2 contains the coenzyme A and lipoic acid, and the E3 contains the NAD and FAD, and E2 also contains the coenzyme A. There are vitamins involved in this enzyme, ठीक है, there are vitamins associated with the formation of these enzymes. वो आपके पास कौन से vitamins होते हैं? That's the thymine. Thymine जो आपके पास है vitamin B1, ठीक है, थायमीन विटामिन B1 जो है वो इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में किस चीज में? थायमीन पायरोफॉस्फेट में. सो जो ये आपके पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है इसकी फॉर्मेशन में विटामिन का भी बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन प्रॉपर्ली इनटेक नहीं होता तो इट मे आल्सो लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम. सो थायमीन जो is also known as vitamin B1. Thymine is required in the formation of thymine pyrophosphate. ठीक है, thymine pyrophosphate में thymine require होता है. And then FAD, flavin adenine dinucleotide, the main component is riboflavin. It comes from the vitamin B2. Vitamin B2 riboflavin that is required for the synthesis of flavin adenine dinucleotide. Niacin, vitamin B3, which is required for the synthesis of nicotinamide adenine dinucleotide. And pantothenic acid, which is vitamin B5, is required for the synthesis of coenzyme A. So this is we just have overview for the pyruvate dehydrogenase complex enzyme structure. So how this pyruvate dehydrogenase complex enzyme is involved in this whole reaction? कि आपके पास जो ये पूरा का पूरा reaction हो रहा है कि it is convert this pyruvate dehydrogenase complex enzyme pyruvate को convert कर रहा है acetyl-CoA में by through a complex mechanism कि इसके different parts होते हैं, ठीक है. pyruvate dehydrogenase complex के has 3 parts, E1, E2 and E3, and thus it has 5 enzyme coenzyme components और उसके 5 enzyme components होते हैं. तो ये सारे मिलकर जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, यही इनका रोल है डिकार्बोक्सिलेशन में, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में इनका रोल है. देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. इसी में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम के ही उसके ही जो है आपके पास स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हैं जो कि आपको एसिटाइल-CoA की प्रोडक्शन करता है, एनएडीएच की प्रोडक्शन करता है. This is the whole mechanism for the reaction, that how this acetyl-CoA is formed by this pyruvate by the action of the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. So this is the
overall mechanism for the pyruvate dehydrogenase complex that it consists of three parts कि तीन enzymes होते हैं. Pyruvate dehydrogenase होता है E1, E2 and E3. This is E1 is pyruvate dehydrogenase, E2 आपके पास है dihydrolipoyl transacetylase and the E3 is dihydrolipoyl dehydrogenase. So this pyruvate dehydrogenase इसका जो main component होता है वो क्या होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट. जो E2 है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज इसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं. एक आपके पास ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड. ठीक है, दिस लिपोमाइड जो है ये बेसिकली आपके पास दिस इज अ नॉन विटामिन पार्ट. ठीक है, बाकी आपके पास जितने भी हैं ये सारे दिस थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड दिस कोएंजाइम ए FAD and NAD ये चारों आपके पास कहाँ से आते हैं. These are derived from the vitamins. But this lipoic acid, it's lipomoid is a combination of lipoic acid together with the amino acid lysine. Okay. So ये जो आपके पास E2 है इसका मेन कंपोनेंट इसमें आपके पास क्या होता है लिपोमॉइड है एंड दूसरा जो है इसका मेन कंपोनेंट क्या है कोएंजाइम A है. The third is dihydrolipoyl dehydrogenase. इसके दो main components हैं. One is FAD and other is NAD. Okay, so we just have studied कि इसके तीन parts होते हैं and then हर एक का जो है main component हमने पढ़ा जो कि reaction में involve होगा. Okay, so now let's come to the reaction, to the mechanism. This is this pyruvate. ठीक है, pyruvate is a 3 carbon molecule. This is 1, 2 and 3. This pyruvate contains the carboxyl group. This carboxyl will be removed by the pyruvate by the action of the E1 enzyme. ठीक है, pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase क्या करेगा ये carboxyl को remove करेगा in the form of carbon dioxide. ठीक है, carbon dioxide remove हो जाएगा this carboxyl group and now this pyruvate ये जो आपके पास 2 कार्बन है इसका जो एसिटाइल ग्रुप है. ठीक है, ये आपके पास जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है इट विल बिकम हाइड्रोक्सी इथाइल. ठीक है, in the form of hydroxyethyl it will be carried by this thymine pyrophosphate. जो E1 का जो main component जो उसका co-factor है that's the thymine pyrophosphate. So thymine pyrophosphate क्या करेगा कि वो इस 2 कार्बन को रिसीव कर लेगा. ठीक है, आप इसको एज अ कैरियर भी कह सकते हैं. सो थायमीन पायरोफॉस्फेट इट्स अ डॉकिंग प्लेस जहां पे आपके पास क्या होगा इट विल कैरी अप दीज 2 कार्बन्स. ठीक है, इन 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करेगा. इट विल बिकम दिस थायमीन पायरोफॉस्फेट will become hydroxyethyl thymine pyrophosphate. Okay, and this pyruvate dehydrogenase is going to eliminate this carboxyl group in the form of carbon dioxide. Okay, now this thymine pyrophosphate it has taken up this part and it became the hydroxyethyl thymine pyrophosphate. Now hydroxyethyl thymine pyrophosphate ठीक है, अब now it will come to the E2. ठीक है, E1 में आपके पास ये रिएक्शन हो गया. अब क्या होगा दिस हाइड्रोक्सीथाइल थायमीन पायरोफॉस्फेट इसका जो ये वाला पार्ट है. ठीक है, दिस पार्ट दिस एसिटाइल पार्ट इट विल बी टेकन अप बाय द E2 में जो आपके पास है उसका जो लिपोमाइड है. ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड दिस इज इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. इट विल टेक अप दिस पार्ट and it will be catalyzed by the enzyme dihydrolipoyl transacetylase. ठीक है, it means that it's going to transfer the acetyl group. Okay, so this hydrogen अगर आप देखें this hydrogen will be taken up by this sulfur. This lipomoid contains the sulfur. Okay, so जो reducing property होती है वो आपके पास सल्फर में भी प्रेजेंट होती है. जो सल्फर है ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इट विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन. ठीक है, H आ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस ऑक्सीडाइज्ड लिपोमॉइड आपके पास ये जो है इसको रिसीव करेगा इस पार्ट को एंड देन इट विल बिकम एसिटाइल पार्ट को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन जो है वो आपके पास सल्फर उसको एक्सेप्ट करेंगे. इट विल बिकम रिड्यूस्ड. ओके, सो एसिटाइल लिपोमॉइड मतलब यही लिपोमॉइड पार्ट है साथ में जो है इसके ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा. एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा देन इट विल बिकम एसिटाइल लिपोमॉइड. एंड दिस थायमीन पायरोफॉस्फेट ये अगेन से जो है आपके पास क्या हो जाएगा इट विल बिकम फ्री. And this thymine pyrophosphate it becomes free and it will be again reutilized in the reaction and it will be ready for the next pyruvate to for the decarboxylation and for the dehydrogenation reactions. Okay, so in this step इस step को हम क्या कहते हैं कि आपके पास decarboxylation का reaction हो रहा है कि carbon dioxide remove हो रहा है. Okay, then this taken by the oxidized lipomide lipomide will get reduced and together with the attachment of this 2 carbon moiety. Okay, this 2 carbon moiety and then it will become acetyl lipomoid.
नाउ जो दूसरा मेन कंपोनेंट आपको E2 का बताया था, जो कोफैक्टर बताया था, together with the lipomide क्या था, coenzyme A. Now in the reaction coenzyme will come, coenzyme A, ठीक है, जो आपके पास कोफैक्टर है, that it is derived from the vitamin B5 pantothenic acid. Okay, so coenzyme A taken up by is derived from the vitamin B5 pantothenic acid. Coenzyme A, इसमें भी प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं. कोएंजाइम ए क्या करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. दिस एसिटाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू द को ए, राइट. so acetyl will be transferred to the CoA and it will become acetyl CoA, right. acetyl will be transferred to the CoA enzyme, coenzyme A will come and it will take up this acetyl group और आपके पास क्या बन जाएगा, acetyl CoA, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ दिस पायरुवेट थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एसिटाइल को ए. नाउ दिस एसिटाइल को ए विल बी रिलीज एंड दिस एसिटाइल को ए इज नाउ रेडी टू एंटर इनटू द Krebs cycle, ठीक है. तो एसिटाइल को ए डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, either it needs to the Krebs cycle or it needs for the synthesis of fatty acids, and then acetyl CoA will enter into the Krebs cycle. Okay, now this lipomide is free but it is in the form of reduced, ठीक है. आपके पास acetyl lipomide था, acetyl is taken up by the CoA and it's became acetyl CoA and now this reduced lipomide, ठीक है, जो reduced lipomide है, now this reduced lipomide will enter into the third reaction, मतलब E2, ठीक है, E3, sorry, E3, dihydrolipoyl dehydrogenase. It means that it's going to cause the dehydrogenation of this reduced lipomide, ठीक है. जो reduced lipomide इसको क्या करेगा, dehydrogenation करेगा. Then in this dehydrogenation reaction, these hydrogen will be taken up as the E3 has two main components. इसके दो main components होते हैं, एक FAD है और एक NAD है. Okay, so this reduced lipomide is going to be oxidized, ठीक है. reduce है, oxidize होगा, and this is oxidized and it's going to be reduced. FAD will take up this hydrogen, ठीक है, and the enzyme act dihydrolipoyl dehydrogenase and FAD will be reduced into the FADH2, ठीक है. FAD आपके पास reduce हो गया, as a reaction क्या हो गया, जो lipomide जो reduce था वो आपके पास क्या हो गया है, oxidized हो गया है. Now this reduced lipomide is oxidized lipomide and this oxidized lipomide is now ready for the new reaction to proceed. Okay, then this E3 FAD is now reduced to the FADH2 and now FADH2 further आगे आपके पास क्या करेगा, it's again going to involve in the oxidation reduction reaction. This FADH2 will reduce this NAD. NAD is oxidized, FADH2 is reduced. NAD क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा FAD से और NAD will be reduced, ठीक है. तो NAD आपके पास इस रिएक्शन में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है. नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ NADH. तो आपके पास इस पूरे रिएक्शन में जैसे हम कहते हैं कि व्हेन पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल को ए, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और आपके पास क्या होता है, NADH की प्रोडक्शन होती है, ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिमूवल होती है वो E1 पे होती है, E1 इज इन्वॉल्व. E2 में जो है आपके पास एसिटाइल को ए रिलीज हो जाता है, ठीक है. और जो तीसरी चीज हमने कहा था क्या होती है, NADH की प्रोडक्शन होती है एंड NADH की प्रोडक्शन जो आपके पास E3 पे होती है. एंड देन दिस NADH enters into the electron transport chain, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और वहां पे आपके पास जो है 2.5 ATP की प्रोडक्शन करते हैं. This is the whole reaction for the pyruvate dehydrogenase complex enzyme. The whole reaction is described here, that the pyruvate dehydrogenase complex enzyme, it consists of E1, E2 and E3. This is the carboxyl group is removed in the form of carbon dioxide by the thymine pyrophosphate, and then this carboxyl group is removed in the form of carbon dioxide and then thymine pyrophosphate is involved in the E1, okay, and then it will goes to the E2 lipomide, then it will be reduced. This lipomide is reduced and thymine will be free, and this acetyl group then will be taken up by the coenzyme A. Coenzyme A will come and will take up this acetyl group and it will become acetyl-CoA. And the one molecule of acetyl-CoA is released by this E2.
and now E2 is reduced form. Now this reduced form of lipomide will reduce the FAD into FADH2, and it itself will get oxidized and will be reused and will set free for the further reactions. Then this FADH2 will reduce the NAD into the NADH. Okay, and then NADH is liberated in this reaction.